lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love. Give me your love. We get lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने श्रेया जैन मतलब कि SHREYA की एक मेकअप ट्यूटोरियल को फॉलो करके इस लुक को रिक्रिएट किया है। एंड मैंने सारे के सारे वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके इस लुक को रिक्रिएट किया है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे इस लुक को रिक्रिएट किया है, आई डोंट नो कि मैं उनकी तरह बिल्कुल भी दिख रही हूँ या नहीं, बट आई लव दिस लुक, आई लव हाउ इट्स लुकिंग। सो अगर आपको भी ये वाला लुक पसंद है एंड आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे इसको रिक्रिएट किया है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। 1 2 3 and go. Ooh, she's looking awesome, guys. Trust me, she's looking gorgeous. I'm going to start off with priming my face and I'm using this Makeup Revolution Ultra All Day Primer Anti-Shine Balm. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया था कि वो इस वीडियो में जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास आई होप कि एक भी नहीं है। सो हम मतलब कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ ही इस लुक को क्रिएट करेंगे। सो आई एम गोना यूज पतंजलि एलोवेरा जेल एज माय प्राइमर। And as usual again, I'm going to start with the center of my face and work this outwards. So I'm also starting from the center of my face and working it outwards. Okay. 1 second. Okay, so मैं भी फेस की सेंटर पोर्शन से स्टार्ट करके आउटर पोर्शन की तरफ इसको ब्लेंड करते हुए जाऊंगी। Like she said. Okay, so I have the same foundation, the Fit Me foundation, but I do not have the BB cream. So I'm just gonna use this foundation only for my base. And we're gonna use this brush. एंड यूजुअली मुझे मेरी फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आई डोंट नो वाई, आई जस्ट कैन नॉट डू इट फास्ट। ओके, सो आई हैव ब्लेंडेड द फाउंडेशन एंड नाउ लेट्स सी व्हाट शी इज डूइंग। ओके, सो शी इज अप्लाइंग अ हाइलाइटिंग कंसीलर टू हाईलाइट एंड कंसील हर फेस। आई डू नॉट हैव द मेबलिन फिट मी कंसीलर, तो हम अप्लाई करेंगे ओलिविया पैन स्टिक विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। My fingers only the I'm area gonna do the under same. my eyes. And with the brush at the other areas. Okay, 1 second. Oh
my god, I'm so super slow guys. I need to make it faster. मतलब मैं सबसे ज़्यादा स्लो हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है यार. मैं किसी का भी मेकअप लुक फॉलो करती हूँ and I'm the slowest one. And then I'm gonna bake lightly with the help of. But I'm really trying to make it faster. You can see I'm trying. Now my lips are also covered with concealer. मेरे lips भी concealer से बिल्कुल cover हो चुके हैं. Okay guys, तो अभी हम ही baking करने वाले हैं and I'm gonna use this SHREYA umbrella sunscreen powder. ये कोई भी flashback नहीं देता है, so that's why I love it. And वो brush ही से baking कर रही है, so I'm gonna use this fluffy powder brush. I'm gonna take a lot of powder because I feel like she has taken a lot of powder as well. And I'm gonna bake my under eyes. So okay, इसको रहने देंगे हम कुछ देर के लिए. And मैं कहीं पे भी और पाउडर नहीं अप्लाई कर रही हूँ. Although I have a oily face, I know कि मुझे करना चाहिए, but I'm gonna blindly follow her. For my cream contour, I'm gonna go in with this honey bronzer by the Body Shop. And Okay guys, so I do not have any cream contour product. So okay, अभी मुझे एक DIY करना पड़ेगा. बट मेरे दिमाग में इससे अच्छा भी और कुछ नहीं आ रहा है. आई थिंक कि मैं ये जो ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर है विलियम पॉलिन का, इससे थोड़ा सा जेल आईलाइनर निकालूंगी. ओके, बहुत ही थोड़ा सा मैंने निकाला है. आई होप यू कैन सी. एंड इसको मैं मिक्स करूंगी विद अ लिटिल बिट ऑफ एलोवेरा जेल. It's working guys. I don't know how pigmented this is gonna be, but it's working finally. I'm gonna apply it with a pack brush. I don't remember the number of this. I'll probably try to write it in the bottom part. So I'm going on my cheekbone as well as on my jaw to hide that double chin. Yikes! I'm also gonna slightly contour my forehead today, just the temples mainly, because I like doing it. It just completes the whole look and binds it together. Okay guys, तो मैंने इसको अच्छे से blend कर लिया है and I feel that it doesn't look too bad. Maybe it doesn't look too good, but बहुत बुरा तो नहीं लग रहा है मुझे. Okay, so हम अभी next step करने वाले हैं. This matte Mishik by L'Oreal, and I'm gonna buff it all over my face except my eyes. Once I'm done buffing with it, I'm gonna dust off the excess powder under my eyes. Okay, so I'm gonna take the same powder जो कि मैंने पहले यूज़ किया था, which is this SHREYA अरोमा थेरेपी पाउडर. एंड मैं इसी को मेरे ब्रश में लेके फुल फेस की मेकअप को सेट कर दूँगी. Okay guys, so I'm gonna use this blush. Okay, it's from ADS and I love this blush. So I'm gonna use this blush. So as she said, उन्होंने पहले थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया था and फिर blend किया था उसको. So I'm gonna do the same. I've applied a lot of blush. जिसके आपको दिख रहा है, I hope. Okay, so मैं पहले highlight कर लेती हूँ, then I'll blend everything together. So for my highlight, उन्होंने एक rose gold kind of shade use किया है. So I'm gonna use this shade. This is a very pretty rose gold shade like this one. You can see. So मैं ये shade use करने वाली हूँ. And with a fan brush. Cupid's bow, again, you know the drill.
little bit on my forehead. I'm gonna take a quick shower in it and then just let it soak everything up. Okay, so I'm gonna do the same, and I'm gonna use this Chrono Care face spray. And उन्होंने बहुत सारा यूज किया था, so I have also used बहुत सारा, as you can see. Then moving on to the color bar eyebrow pencil, I'm just In 1 second, I'm not done yet. Oh my god. Okay, so let's see कि next step क्या है. to define my brows with this. So I'm going in short strokes and just filling up my eyebrows. Okay, so उन्होंने एक brow pencil use किया है brown color का. So I'm gonna use this brown gel eyeliner, जो मैं हमेशा use करती हूँ मेरे brows को define करने के लिए. जल्दी से मैं कर लेती हूँ. So now मैं एक spoolie brush की मदद से इसको blend कर लूँगी, because उनकी जो pencil है, मतलब जो eyebrow pencil है, उसमें एक spoolie brush भी है. So I'm just going to do this. I love stage eyeshadow primer. I'm just gonna pop this on my lid area and then. So I'm going to use the same concealer to prime my eyelids. As a cream base, I'm gonna put this color pop eyeshadow all over my eyelid again with the help of my finger. This will just give a nice base for my eyeshadow, which will come later on in this video. So for this, I'm going to use a lip gloss. Yes, this Bella Vostra lip gloss. I don't know कि ये कैसे काम करेगा, but I'm going to try it out. So I'm going to use this Bella Vostra lip gloss. Oh my god. बहुत ही थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है, you can see. And मैं बस एक ही आई ऑन कैमरा करूँगी, because उन्होंने भी वही किया है. तो ये मेरे आईलिड्स को थोड़ा सा स्टिकी बनाएगा, जो कि बाद में मेरे आई शैडो को अच्छे से मतलब पकड़ लेगा. तो I'm gonna take a blending brush, small blending brush, and I'm gonna take a dark brown color, जैसे कि उन्होंने कहा था. And ये बहुत ही similar color है. So I think ये अच्छे से blend हो गया है. And now I'm gonna take. What am I gonna take? Okay, I'm gonna take the same highlighter. So I'm gonna take this one, ये वाला highlighter, जो कि I think आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, but this is a really nice shade, rose gold जैसा ही दिखता है. And उन्होंने एक wet brush की मदद से इसको apply किया था. So I'm gonna do the same. So मैं इसको full moving eyelid में apply कर रही हूँ, and inner corner में भी apply करूँगी. Okay, so मैंने इसको apply कर लिया है, and so she's using a shiny black shade. मेरे पास भी है एक similar shade, but ये बहुत ज़्यादा shiny नहीं है. So I'm gonna use this black shade. This is satin finish black, बिल्कुल matte नहीं है. So I hope it's nice and blended, and now I'm gonna highlight my brow bone and in a corner. Okay, so I'm gonna use this white shade from this palette. Okay, so now I'm gonna apply the eyeliner. It's gonna take a long time, guys.
guys, I have done the same thing on the other eye as well. I think ये थोड़ा बहुत तो similar लग ही रहा होगा, I don't know. So now she's using a mascara. I'm gonna use the Maybelline Colossal Mascara. Structure, I'm going in with my pen eye contour powder, and I'm going to just deepen my contour a little bit out with that same brush. Okay, so I'm going to do the same thing, and I'm using Miss Claire Mono eyeshadow in the shade brown. One second, I'm going to show you. This is all broken. So this is the eyeshadow. This is the brown eyeshadow, matte brown eyeshadow. So I have slightly contoured my nose, but I really need a good nose contour because I don't have a good nose. Okay, so I think that I have a similar shade like her. So मैं ये वाला Rose Crush shade use करने वाली हूँ Bella Voste का. I don't know कि ये actually में similar है या नहीं, but let's see. So I think कि उनका लिपस्टिक थोड़ा सा और पिंक था, so I'm gonna use this Miss Pink shade. बस थोड़ा सा मैं डैप करूँगी. So yeah guys, this is the final completed look. So I hope कि आपको पसंद आ रहा होगा. I have added some false eyelashes off camera. And I am loving this look. I don't know मैं उनकी तरह कभी भी लग सकती हूँ या नहीं. I don't know look थोड़ा सा भी similar हुआ है या नहीं. But जो भी हुआ है यार, I love it. I love this look. So I hope कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा. So I hope कि आपको भी ये वाला look पसंद आ रहा होगा. And अगर आपको ये वाला look पसंद आया है मेरी तरह, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा thumbs up दीजिए. And अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू इट. एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की मतलब मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए एंड आप सबसे पहले वो वीडियोस देख पाओ. सो यार डू दैट. एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी.